Sing that shit. Shit. हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है ऋषभ रे एंड बहुत टाइम के बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। इट हैज़ बीन सिंस आई गेस 4-5 months सिंस आई हैव मेड द लास्ट वीडियो, क्योंकि उसके बाद आई हैव नेवर रियली गॉट एनी टाइम टू मेक एनी न्यू वीडियो। सो आज की इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल जैसे कि आपने पढ़ा होगा, आई विल बी शोइंग यू अ ब्रीफ प्रोसेस ऑफ हाउ यू कैन गेट इनटू ITC रॉयल बंगाल which is situated in Kolkata. So let's start with the first topic, which is the hotel specification and what is basically the hotel and where is it. So ITC Royal Bengal is basically it is a part of ITC hotel, जिसमें दो hotels आते हैं, which is ITC Shonar and ITC Royal Bengal. दोनों hotel एक ही complex में है. So once you get into ITC, you can either be selected into ITC Shonar और ITC Royal Bengal, लेकिन यूनिट आपका सेम ही रहता है. इट्स लाइक वन कॉम्प्लेक्स के अंदर ही होता है, लेकिन आप काम एक दूसरे होटल में करोगे. नाउ हाउ यू कैन गो एंड हाउ यू कैन अप्लाई फॉर इट. लाइक मैंने अप्लाई किया था वाया लिंक्डइन. ओके, आप अगर स्क्रॉल करोगे एंड इफ यू गेट एनी वैकेंसी यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट दी HR, यू कैन गेट दी HR email ID, देन यू कैन सेंड योर रिज्यूमे एंड इफ़ यू गेट शॉर्ट लिस्टेड तो उसके बाद का प्रोसेस होता है. इधर लिंक्डइन में होता है, अदर जॉब एप्लीकेटर्स भी होते हैं लाइक jobdeko.com. एंड ऑल्सो यू कैन जॉइन माई व्हाट्सएप चैनल एज वेल. व्हाट्सएप चैनल का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा. यू कैन गो एंड यू कैन जॉइन ओवर देयर एज वेल. वहाँ पे भी जो होटल्स का आता रहता है, आई विल बी पोस्टिंग यू अबाउट दैट एज वेल. सो जैसे ही आप एक CV भेजते हो HR की email ID पे, इफ़ यू गेट शॉर्ट लिस्टेड तो आपका बाकी का बाद में प्रोसेस स्टार्ट होता है. नाउ इन माई केस व्हाट आई रियली डिड इज़ दैट आई सेंड माई resume via LinkedIn to the HR email ID, and after maybe 3-4 days I got a call that we have shortlisted you and then we wanna do a face-to-face interview. लेकिन मैं उस टाइम पे मैं कोलकाता में नहीं था. So what I suggested is that I cannot do a face-to-face interview, so let's do it via telephonic. तो मैं टेलीफोनिक इंटरव्यू मैंने किया एंड वाया टेलीफोनिक ओनली देन आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड एंड देन अगेन दे टोल्ड मी दैट नाउ वी विल बी कंडक्टिंग योर राउंड्स. अभी इन माई केस इन ITC रॉयल बंगाल फॉर मी द राउंड्स वे टोटल 3 राउंड्स हुए थे एंड द पोजीशन वाज बेसिकली फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव. सो आई वाज बेसिकली फ्रॉम FO बैकग्राउंड. सो मैंने FO बैकग्राउंड के लिए अप्लाई किया था एंड फॉर दैट रीज़न मेरे 3 राउंड हुए थे. अभी वो सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, बट फॉर मी जनरली इट वॉज 3 राउंड्स. 3 राउंड्स में सबसे पहला राउंड जो था दैट वाज बेसिकली द HR मैनेजर राउंड. नाउ HR मैनेजर राउंड में बेसिकली आपसे क्या पूछा जा सकता है. इन HR मैनेजर राउंड बेसिकली द HR मैनेजर ही आस्क्ड मी अबाउट माई सेल्फ, दैट मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मैंने क्या एजुकेशन किया है एंड अ ब्रीफ अबाउट दैट. लाइक जस्ट टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, जो कि आप सब लोगों को पता भी होगा. इट्स अ मोस्ट कॉमन क्वेश्चन एंड एवरीबडी आस्क अबाउट इट. आई टोल्ड इट इन अराउंड 1.5 to 2 minutes. मैंने अपने बारे में इंट्रोड्यूस किया, माई फैमिली, माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, माई एक्सपीरियंसेस, whatever, etc. I told, and after that they told me that are you comfortable to go back and forth from your home as well or not, क्योंकि मेरे घर से ITC is around like 15.5 kilometers. So they asked me whether I'm comfortable or not. I said that yeah, I'm comfortable. I do have my private vehicle, or else I can use public transportation as well, whatever is convenient. And then they said me that okay fine, we gonna now go for the second round. सो बेसिकली फर्स्ट राउंड जो होता है वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से प्रेजेंटेबल होते हो. बिकॉज इन द वेरियस इंटरव्यूज़ और मेरे 2.5 से 3 years के एक्सपीरियंस में मैंने जो देखा है, दैट इज़ एन HR वेन एवर ही इज़ टेकिंग योर इंटरव्यू, he has a lot of different students as well who are actually in the line, in the queue to give the interviews as well. अभी एक दिन में शायद से एक HR 15 से 20 लोगों का इंटरव्यू लेते हैं. Now if they start giving everyone like 15-20 minutes, then it's going to be a hell lot of time. So normally एक HR क्या करता है कि they just first they check your profile, आपका प्रोफाइल चेक करता है, then they check your gestures, आपके facial gestures, आप कैसे दिखते हो, they just check on that, and they what they usually do is that they check your English communication. Now if your English communication is up to the mark, then उसी में आपका like 80% हो जाता है. Because normally अगर आपको बहुत सारे questions अगर वो पूछते रहेंगे तो उसका भी बहुत टाइम चला जाएगा and you also get confused. Because ऐसा होता रहता है कि आपको जब बहुत questions पूछे जाते हैं then we naturally get confused. अगर मैं भी होता तो मेरे लिए भी बहुत ऐसा confusion हो जाता था, क्या question आएगा, उसका क्या मैं आंसर दूंगा.
So my first round was like maybe for like 3 minutes maximum. 2.5 से 3 मिनट का था. 2.5 से 3 मिनट के बीच में मुझसे यही क्वेश्चन पूछे गए थे, बेसिक क्वेश्चंस. And after that they told me that now the second round would be with your HOD, which is basically my FOM, front office manager. So after maybe 2-3 days, I again then got a call on WhatsApp call, basically on from that particular HR number only, and it was a video call. And they said me that please be ready by this time. You will be having a video call. Please just be in a presentable stage. It's going to be a video call with the HOD of your department. So I was ready, and then it was again the FOM's turn. He then asked me again the same question, then that just tell me something about yourself. I told that, and after that they told me that because I was already working with a different company, so they told me that why you want to shift to this company, what is the reason, whatever the thing is. Now whenever this question comes to you as well, you have to give a very strong answer. आप कभी भी ये नहीं बोल सकते दैट आपको इस कंपनी में इसीलिए आना है क्योंकि इस कंपनी में सैलरी ज़्यादा है, या फिर इस कंपनी में फैसिलिटी ज़्यादा है, या फिर ये कंपनी में मे बी आपको बहुत सारे ज़्यादा पर्क्स मिलेंगे. यू कैन नॉट एवर टेल दिस थिंग, क्योंकि हम लोग हॉस्पिटैलिटी स्टूडेंट्स जो होते हैं, हम लोग जो भी कंपनी में काम करेंगे, XYZ वट एवर कंपनी, आई डोंट वांट टू नेम एनी कंपनी, बट जो भी कंपनी में हम काम करेंगे, हर कंपनी के अप्स एंड डाउन्स होते हैं. सो वी कैन नॉट एवर टेल लाइक दिस दैट दिस कंपनी इज़ बैड एंड दिस कंपनी इज़ गुड, बिकॉज जो भी होता है दैट इज़ इंटरनल थिंग दैट वी नो फ्रॉम विद इन आवरसेल्व्स ओनली, बट वो चीज़ हमको कभी भी किसी और को पता नहीं लगानी चाहिए. So I told that so in my answer was that when he asked me the same thing, I answered him that, sir, I want to move because Kolkata is my hometown, and I want to stay close to my family, and for that reason only I want to choose this hotel because it's first of all in my own state and I'm going to be with my family. So every day when I come back home, I can at least be at my own home. So that was my answer. Now अभी सबके लिए वेरी कर सकता है, whatever answer you want to give, but for me this was my answer, and this answer was, he was quite impressed with that. So he told me that I liked your answer, and then he said me that okay fine, the HR will now contact you for further details. So that was it. It was again a 2.5 to 3 minutes round interview, and in this time only he asked me about certain questions, and that was it. After this, then the HR told me in the evening, like the interview was in the morning 11 o'clock or something like that. In the evening 6:30 to 7 p.m, he then texted me that congratulations Rishabh, you have been selected for the third round, which is the final round, would be with your general manager. Now he will contact you after a week. So it was already, I guess, Wednesday or Thursday, the day I was giving the interview. He told me that GM will be interviewing you on Monday. So I waited for again 4-5 days, and after that he told me that GM is now available by afternoon. Please be ready. It's going to be again a video call. Now I again accepted the call. I was on the video call with the general manager. Abhi jo general manager, when he asked me about, like, when I opened my camera and when I was in front of him, the questions he asked me was that Rishabh, what is your age? So that was number one. He asked me that what is your age? I said that my age is this. Then he asked me that are you married or not? I said that no, I'm not married. Then he asked me that what's your hometown? I said my hometown is Kolkata. Then he said okay fine. Then he asked me some questions about my last company, what was my last salary over there, do I have the payment slip of the last company as or not? I said that yes, I do have that. And that was it. He basically just checked my English communication, whether I'm good in communicating or not, because I'm the FO department, and in FO department English communication plays a very vital role, because it is all that you have to do. You have to communicate with people, you have to communicate with guests and everything. So he just checked my communication, my vocabulary, my pronunciation, and that was it. GM राउंड के साथ मेरा जो इंटरव्यू हुआ था, दैट लास्टेड आई गेस फॉर 60 सेकेंड्स, 1 मिनट, दैट्स इट. 1 मिनट में उन्होंने सिर्फ ये 3-4 क्वेश्चंस पूछे, एंड ही सेड दैट ओके ऋषभ, नाउ द HR विल कॉन्टैक्ट यू फॉर फर्दर्स. ही देन आस्क्ड मी दैट आपको कुछ सवाल है हमसे? आई सेड दैट नो सर, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, एंड दैट्स इट. देन ही सेड दैट ओके थैंक यू सो मच, एंड उसके बाद माई इंटरव्यू वॉज डन. And in the evening, then my HR, the person with whom I was coordinating basically, he told me that congratulations, you are selected. We are going to share you the offer letter by 2-3 days. I was happy that fine, mera selection ho gaya. And after 2-3 days, then I received a email on my
Gmail ID, which was offer letter, offer of employment, this position, this would be your joining date, this is your offer letter, and every other detail. And that was it. So this is all about the joining, pre-joining formalities which was there, like interviews कैसे हुआ था वगैरह वगैरह हुआ था. Right now the thing is that I have already completed my pre-joining formalities as well, like my medicals and everything. So if you get selected in this property, it's going to be really great. I mean, my first impression about this property is really great. I'm really looking forward, because this would be the first time that I would be working as a full time in my own city. क्योंकि इसके पहले मैंने जहाँ भी काम किया है, दिस हैज़ ऑलवेज बीन आउटसाइड माई होम सिटी. एंड ऑलवेज एक रहता ही है कि आप जब भी कोई कंपनी में काम करोगे, अगर आप अपने जगह पे काम करते हो, सो इट इज़ ऑलवेज एन एडेड एडवांटेज. आई डोंट रियली थिंक अबाउट द सैलरी मच, क्योंकि सैलरी शायद से ऊपर नीचे हो सकता है, बाहर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा. अगर आप सिटी में काम करोगे सैलरी थोड़ा सा कम मिल जाएगा, लेकिन आपको दूसरे तरीके से भी सोचना पड़ेगा कि आप घर पे काम कर रहे हो, आप घर के सामने काम कर रहे हो, तो इसमें आपको बहुत सारे एडेड एडवांटेजेस भी होते हैं. आपके एक्सपेंडिचर थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि जब बाहर रहोगे तो बाहर आपको फूड वगैरह, ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत अलग अलग तरीके का खर्चा आ सकता है. लेकिन आप अगर घर के सामने काम करोगे तो कंपैरेटिवली लेस हो जाता है. मैं ऐसा नहीं बोल रहा नहीं रहता है, लेकिन कंपैरेटिवली लेस हो जाता है. एंड आई ऑल्सो थॉट अबाउट द सेम थिंग ओनली, एंड फॉर दैट रीजन ओनली आई एक्सेप्टेड द ऑफर. एंड राइट नाउ आई एम वेरी हैप्पी, एंड आई विल बी मेकिंग सम मोर वीडियोस एज वेल. अगर मुझे मौका मिलेगा अंदर के काम करने का तरीका, अगर आई कैन इफ आई गेट एन परमिशन टू शूट इट, देन आई विल डेफिनेटली पोस्ट द सेम वीडियोज ऑन यूट्यूब एज वेल ऑन माई चैनल. और उसके अलावा यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी इफ़ यू नीड एनी हेल्प, एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन दिस कंपनी, आई कैन लेट यू नो दैट यस, इट इज़ one of the best company, because people who are from Kolkata, if you're watching from Kolkata, तो आपको पता ही होगा कि ITC Royal Bengal has a very good reputation in terms of hospitality. जितने भी लोग आप देखोगे, हमारे ITC Royal Bengal के बाजू का जो हाईवे, द माई फ्लाई ओवर, वहाँ से जो लोग भी जाते हैं, 90% ऑफ द पीपल एक्चुअली शूट दी होटल, बिकॉज इट इज़ सच अ स्टनिंग व्यू. सो यू कैन जस्ट इमेजिन दैट अगर होटल अगर बाहर से इतना अच्छा है तो अंदर से कैसा होगा. एंड दैट इज़ रियली द फैक्ट. द होटल इज़ वेरी गुड, and I'm actually really looking forward to join, complete my all the process and everything, and then work freely over there. और उसके अलावा अगर आपको कोई भी questions होगा, if you want to ask anything regarding interviews or anything like that, you can always DM me on Instagram. I'm active on Instagram, and for the time being आप मेरे WhatsApp channel को भी join कर सकते हो. Over there I'll be showing you a lot of different opportunities. Whatever opportunities I'll be getting from the hospitality sector, I'll be posting over there as well. Till then, thank you and stay tuned. अगर आप चैनल में नए हो, then do subscribe this channel as well. Alright, thank you so much guys.